हेलो एवरीवन। सो गाइस, कैसे हैं आप सब। दिशा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, चलिए। अंडर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट के ड्रिफ्टिंग से के लिए बेसिकली इनमें से कौन से फोर्सेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। पोल फ्लीइंग फोर्स, टाइडल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, convectional current of earth. So under this continental drift theory, कॉन्टिनेंट्स के ड्रिफ्टिंग के लिए इनमें से क्या फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है। बेसिकली आपको मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो 1915 में जर्मन साइंटिस्ट ऑल्फ्रेड वेगनर द्वारा पुट फॉरवर्ड की गई थी। और इस पर्टिकुलर थ्योरी के हिसाब से पार्ट ऑफ क्रस्ट आर कैपेबल ऑफ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट अराउंड द ग्लोब, causing the continents to slowly change their positions in relation to one another. ठीक है, तो फोर्सेस जो है बेसिकली अकॉर्डिंग टू वेगनर द ड्रिफ्ट वाज इन टू डायरेक्शंस। पहला टुवर्ड्स द इक्वेटर बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन ऑफ फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी, पोल फ्लीइंग फोर्स एंड बायेंसी, एंड देन वेस्टवर्ड्स बिकॉज ऑफ टाइडल करेंट्स बिकॉज ऑफ अर्थ्स मोशन। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ए, दैट इज 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो इंक्रीज होता है एज वी मूव फ्रॉम पोल्स टुवर्ड्स द इक्वेटर, एंड दिस इंक्रीज इन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हैज लेड टू पोल फ्लीइंग अकॉर्डिंग टू वेगनर, एंड दिस टाइडल फोर्स इज ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ मून एंड द सन दैट डेवलप्स टाइड्स इन ओशनिक वाटर्स। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। द इरोसिव वर्क ऑफ द सी डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। साइज एंड स्ट्रेंथ ऑफ वेव्स, seaward slope, height of the shore between low and high tides, composition of rocks, depth of water. The erosive work of the sea, इनमें से किन फैक्टर्स पे that depends। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज डी, सारे के साथ। Coastal erosion and landform thus formed. The sea performs the function of erosion and deposition through sea waves aided by currents, tides, and storms in coastal areas. The erosive work of the sea depends upon size and strength of waves, seaward slope, height of the shore between low and high tides, composition of rocks, depth of water. ठीक है, so the wave exerts a pressure to the magnitude of 3000 to 30,000 kilogram per square kilometer, and this wave pressure compresses the air trapped inside rock fissures, joints, faults, etc., forcing it to expand and rupture the rocks along weak points. And that's the reason rocks जो हैं they get worn down under wave action. ठीक है, so correct answer is which of the following are sedimentary rocks? Shale, gabbro, volcanic breccia, chert. Sedimentary rocks इनमें से कौन कौन से हैं? So correct answer of the question are basically अगर हम ग्रेनाइट की बात करें, गैब्रो, बसाल्ट, ओके, वोल्केनिक ब्रेकिया, ये सारे इग्नियस रॉक्स के एग्जांपल हैं। सो करेक्ट आंसर होगा 1 and 4, दैट इज ए। ओके, द वर्ड सेडिमेंट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेडिमेंटम, जिसका मतलब होता है सेटल होना। ओके, सो रॉक्स चाहे वो इग्नियस हो, सेडिमेंट्री हो या फिर मेटामॉर्फिक हो, they are exposed to denudation agents and they are broken up into various size of fragments. Such fragments are transported by different exogenous agencies and deposited. And this deposits through compaction turns into rocks. और इसे हम lithification कहते हैं। Okay, so in many sedimentary rocks, the layers of deposits retain their characteristics even after lithification. The process of foliation, lineation, and banding is associated with igneous rocks, sedimentary rocks, metamorphic rocks, all of the above. Okay, the process of foliation, lineation, and banding, it is basically associated with metamorphic rocks. Okay, so metamorphic मतलब होता है change of form, and these rocks they form under the action of PVT changes, that is the pressure, volume, temperature changes. So metamorphism it occurs when rocks are forced down to lower levels by tectonic processes, या फिर जब molten magma rises through the crust comes in contact with the crustal rocks, or the underlying rocks are subjected to great amount of pressure by overlying rocks. Okay, so this metamorphism is a process by which already consolidated rocks undergo recrystallization, reorganization of materials within original rocks.
Which of the following are block mountains? Great African Rift Valley, Rhine Valley, Vosges Mountain. ओके, ब्लॉक माउंटेन इनमें से कौन से हैं, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है, ये आपको यहाँ पे बताना है. सो ब्लॉक माउंटेन्स जो है गाइज, यहाँ पे सारे के सारे ब्लॉक माउंटेन्स हैं. द टर्म ब्लॉक माउंटेन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय W.M. डेविस. अदर टर्म्स आर फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन एज गिवन बाय D.W. जॉनसन, या फिर सिंपली फॉल्ट ब्लॉक्स. ठीक है, तो ये सारे इतना डिटेल में आपको जाने की नीड यहाँ पे नहीं है. थोड़ा सा आपको बस ये बता देता हूँ कि ब्लॉक माउंटेन्स दे रिप्रेजेंट द अपस्टैंडिंग पार्ट्स ऑफ द ग्राउंड बिटवीन टू फॉल्ट्स or on either side of a rift valley or a graben. Okay, they are formed as a result of faulting caused by tensile and compressive forces motored by endogenetic forces. ठीक है, सो दो तरीके के, दो बेसिक टाइप्स के ये होते हैं, tilted block mountains, lifted block mountains. Which of the following are importance of plateaus? Plateaus are rich in mineral deposits. In most areas occupied by plateaus, there are waterfalls as well as river falls. Most plateaus are characterized by plenty of grass. Volcanic plateau consist of fertile soils which are suitable for farming and other agricultural activities. ठीक है, सो प्लेट्यूज की हम अगर बात करते हैं तो सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. बेसिकली प्लेट्यूज की अगर हम बात करें, दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स दैट कैन बी माइंड बाय मैन. देखिए, जो माइनिंग्स एंड ऑल होती हैं. Waterfalls in most of the areas occupied by plateaus, there are waterfalls as well as river falls. Okay, water is a basic need. We all know such places will act as sources of drinking water as well as water for other valuable activities. Then extensive grasslands. Okay, so most plateaus are characterized by plenty of grass. The places are therefore crucial for the nomadic lifestyle because grass is essential animal food. Okay, the green pastures on the plateaus are a perfect match for the growth and rearing of domestic animals. Playas are associated with which of the following landforms? Fluvial landforms, desert landforms, karst landforms, glacial landforms. Correct answer is B. Okay, so basically correct answer is desert landforms. So it's the process of inundation that develops and maintains the near perfect flatness, so characteristic of these arid region landforms. Okay, so plains are by far the most prominent landforms in the deserts. In basins with mountains and hills around and along, the drainage is towards the center of the basin, and due to gradual deposition of sediment from basin margins, a nearly level plain forms at the center of the basin. Okay, in times of sufficient water, the plain is covered up by a shallow water body. और उन shallow lakes को जो है वो प्लेयास कहा जाता है. Which of the following factors affect the pattern of planetary winds? Latitudinal variation of atmospheric heating, emergence of pressure belts, distribution of continents and oceans, rotation of Earth. इनमें से कौन से फैक्टर्स हैं जो प्लैनेटरी विंड्स के पैटर्न को अफेक्ट करते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है. तो करेक्ट आंसर होगा इसका भी डी. ओके, सो प्लैनेटरी विंड्स के पैटर्न जो है वो लार्जली डिपेंड किस पे करते हैं? लेटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक हीटिंग, प्रेशर बेल्ट के इमर्जेंस पे, ओके, माइग्रेशन ऑफ बेल्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिनेंट्स, रोटेशन ऑफ अर्थ. ओके, सो बेसिकली प्लैनेटरी विंड्स का जो पैटर्न है, जो मूवमेंट का पैटर्न है, उसे जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर कहा जाता है. इट ऑल्सो सेट्स इन मोशन द ओशन वाटर सर्कुलेशन, जो कि अर्थ के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है. अलाइजे या फिर अलीजे, बोरा, चिनूक, हमसीन. ओके, और प्लेस ऑफ ओरिजिन आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है. तो नथिंग टू एक्सप्लेन. ओके, आप यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हैं, एंड करेक्टली आंसर इसका मैच जो है वो है सी, दैट इज 3 and 4. ठीक है, सो लिस्ट ऑफ सम लोकल मेजर लोकल विंड्स. एलीज, इट इज मैरीटाइम वेट, फ्रेश नॉर्थर्ली विंड अक्रॉस वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका. देन बोरा अगर आप देखोगे, नॉर्थ ईस्टर्ली फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप टू नॉर्थ ईस्टर्न इटली. चिनूक जो है वो वार्म ड्राई वेस्टर्ली ऑफ द रॉकी माउंटेन्स. ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप इसके बारे में पढ़ लेना ताकि चीजें याद रहें और एग्जाम में आपको डाउट ना. ओके, एंड गाइस, जब भी इन एमसीक्यूज को हम करते हैं, आपको एक चीज ध्यान ये रखनी है कि आपको रिवीजन करते रहना है. बिकॉज अगर आपने रिवीजन नहीं किया, ठीक है, अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो ये एमसीक्यूज फिर आप भूल जाओगे, आपको याद नहीं रहेगा कि कौन सी चीज कहाँ से है क्या नहीं, कोई फायदा नहीं. सो रिवीजन इज द की दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड. Consider the following statements regarding fog and mist.
Fog forms on cold surfaces when condensation takes place below freezing point, that is the dew point is at or below the freezing point. Fogs are drier than mist and they are prevalent where warm currents of air come in contact with cold currents. ठीक है, so देखिए फ्रॉस्ट फॉर्म्स ऑन कोल्ड सर्फेस, जहां कंडेंसेशन जो है वो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है फॉग फॉर्म्स, इट इज नॉट फॉग, इट इज फ्रॉस्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है। सेकंड इज ट्रू। Okay, when the temperature of an air mass containing a large quantity of water vapor falls of a sudden, condensation takes place within itself on fine dust particles. Okay, in urban and industrial centers, smokes provides plenty of nuclei which helps the formation of fog and mist. Such a condition is called as smog. Regarding ocean salinity, theme statements are salinity at the surface increases by the loss of water to ice or evaporation. Salinity at depth is very much fixed. The lower salinity water rests above the higher salinity dense water. सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही, ठीक है। हाई सैलिनिटी सी वाटर जो होता है इट सिंक्स बिलो द लोअर सैलिनिटी वाटर, ठीक है। तो लोअर वाला जो है वो अल्टीमेटली ऊपर होता है, जिस वजह से सैलिनिटी का स्ट्रैटिफिकेशन होता है। तो सैलिनिटी जो है इट चेंजेस विद डेप्थ, but the way it changes depends upon the location of the sea. Salinity at the surface increases by the loss of water to ice or evaporation, or decreased by the inputs of fresh water such as from the rivers. At the depth, salinity is very much fixed because there is no way that water is lost or the salt is added. ठीक है, तो ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलता हूँ कुछ और एमसीक्यूज के साथ।